and let us go ahead towards discussion of economics. Last lecture we were discussing the chapter called as foreign trade, India's foreign trade. What we studied in our last lecture was what is trade. I said trade. मतलब आपने कॉमर्स में स्टडी किया हुआ ट्रेड मीन्स buying and selling of goods. Trade means buying and selling of goods. On the basis of area of operation, I have said that the trade is classified into two types. We have classified the trade into two types. That is internal trade, where I said the trade which is undertaken within the political boundaries of the country is called internal trade. Is called internal trade. और मैंने बताया था internal trade is also known as domestic trade, or some people also call it as home trade. Domestic trade or home trade. Further, we have described one very important part that is called as external trade. I said external trade is the trade beyond political boundaries of the country. The trade beyond political boundaries of country is called external trade. मैंने बताया था external trade is also known as foreign trade or is also known as international trade. इस ट्रेड की स्पेशलिटी क्या थी? वहां पे it involves multiple countries, it involves multiple rules and regulations, and it involves multiple currency. बाद में हमने स्टडी किया था रोल, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट? डिस्कस किया था हमने रोल, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. Okay. So, in our lecture of economics, today I'm going to discuss one part of the studies called as composition of foreign trade in India. Composition of foreign trade in India. आज हम लोग सिर्फ यही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. उसके लिए जितनी देर अपना लेक्चर चलेगा उतनी देर चलेगा. मतलब अगर 15 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, आई लीव यू इन 15 मिनट्स, एंड 1 hour 15 मिनट्स लगा तो आई विल टेक 1 hour 15 मिनट्स. So first thing we should know, we should understand that what is composition of foreign trade. देखो, foreign trade मैं एक सिंपल बताता हूं. हमको पता है फॉरेन ट्रेड दो पार्ट के होते हैं, राइट? एक होता है इंपोर्ट और दूसरा होता है एक्सपोर्ट. Ignore entry port trade because interport trade is nothing else but import and export. Okay. So दो पार्ट है, import and export. तो
what we import and how much we import is called composition of import. What and how much, and what we export and how much we export is called composition of export. समझ रहा है? मतलब what and how much we import and export. Composition of foreign trade में we will come to know what. हमको क्या पता चलेगा अभी इतने मीनिंग पे से आप लोग बताओ, हमको क्या पता चलेगा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पे से? टेल मी, हेल्प मी, कंपोजिशन पे से हमको क्या पता चलेगा? प्लीज हेल्प मी. वो ठीक है, वो तो मैंने ही बताया, सिंप्लीफाइड वे पे बताओ ना मुझको. आई टेल यू, सिंपल वे पे मैं बताऊं, दो चीजें पता चलती है अपने को. फर्स्ट वी कम टू नो the product which we import, the product what we export. The product that we import and export. Okay. And secondly, quantity, what we import and export. We'll come to know only from composition. Products. तो मीनिंग लिख लो कंपोजिशन का. Composition of foreign trade indicates composition of foreign trade explains us about the product what we export or import. The product what we export or import will be called as composition of foreign trade. Okay. अभी हम लोग इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला पार्ट हम देखेंगे ए कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. हम लोग इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, या तो पहले इंपोर्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट वी परचेज, एंड देन वी डिस्कस एक्सपोर्ट्स. कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स, हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं. तो first thing what we import is petroleum products. The very first thing what we import is petroleum product. देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, we are importer of petroleum product. I can say petroleum products are among the highest level of imports in the Indian economy. In India's economy, we can see that one of the most important import
is petroleum product. Approximately 1/3 of the import constitutes petrol. मतलब अगर हमने $100 का कुछ इंपोर्ट किया हुआ है तो उसमें 110% $33 के आसपास का इंपोर्ट अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होगा. बट रिमेंबर हम लोग प्योर पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करते हैं. वी आर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल. उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है अपने यहाँ पे. सो वी आर इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम, बट I can say oil products, crude oil, we are importing. Second major import of India is gold. इंडिया के इंपोर्ट में सबसे मेजर पार्ट है गोल्ड. ये गोल्ड का शाइनिंग इतना वास्ट है that Indians को वो अट्रैक्ट करता है. Roughly, if we observe, I take up example of 20 years back. That is 2000 के आसपास में, 2001, 2002. That year, the price of gold was 4,200 rupees per 10 gram. कितना था प्राइस? 4,200. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. And yesterday, the price of gold was 58,000 per 10 gram. इतना ह्यूज रेट एक्सपेंशन हुआ है. It is observed that in India, the consumption of gold is very high. People do not consume, people purchase it and keep. People do not consume, people purchase it and keep. Roughly, अगर आप observe करो, the annual demand of gold in India was 690 metric tons. कितना था? 690 metric ton. 1 ton is equal to 1000 kg and metric ton बोल दिया मतलब 100. So this is what is our annual demand for gold. Annual demand for gold in India is 6 crore 90 lakh kgs. This is the information given up by one of the department called as Statista department.
उसने ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. So you can see that there is huge demand for gold. आप ऑब्जर्व करो, there are some temple trust in India जिनको ग्राम्स में नहीं, they receive donation of golds in kilograms. आपको अगर पता रहेगा तो in lockdown situation also, the temple authority of Siddhi Vinayak temple of Dadar, उस टेम्पल को गणपति के लिए 2 थाली, 2 ग्लास, 2 वाटी, 2 चम्मच और 2 लोटे गोल्ड के बने हुए किसी ने डोनेट किए थे. He did not wish to give his name also. 2 थाली, 2 वाटी, 2 चम्मच, 2 ग्लास और 2 लोटा, सब मिला के it was around 6 kgs of gold. So you can just imagine, people are demand in India. Gold is having huge demand, and it is largely when I say India is an agrarian country, I mean to say that in India, agriculture is a major occupation. Agriculture is a major occupation in India. And I should tell you very specifically, friends, that no doubt agriculture is a major occupation, but largely it is one of the backward sector. Largely it is one of the backward sector because we still use primitive techniques. We still use primitive technique. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट भी है अपने को. आज जैसे use of modern machineries are not done. We are not using high yielding variety of seeds. We are also not using nitrogenous fertilizers. Major farmers, large number of farmers in the rural area, even today use compost manure. मगर हम मॉडर्नाइजेशन के तौर पे हमारे फार्मर्स को अभी बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या यूज करो, फर्टिलाइजर्स यूज करो. और फॉरेन कंट्री वाले लोग अभी बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स कंपोस्ट मैन्यूअर, जिसको वो लोगों ने एक नया नाम दे दिया, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. मतलब हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया. और हमारे फार्मर्स बरसों से जब यही यूज करते आ रहे थे, दे सेड यू आर इलिटरेट, तुम पागल हो, और हमको केमिकल वाली चीजें खिलाना चालू कर दिया. एंड नाउ ऑल फॉरेन कंट्रीज वांट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. And since 1980s, when we have implemented Green Revolution, by the implementation of Green Revolution, we have started use of fertilizers. Largely, we are using fertilizers
in our country so that the agricultural production can be improved. And fertilizers are largely imported, but I should tell you that now, as there is also awareness in India about organic farming, the imports of fertilizers in India has reduced. I can say roughly in 1990-91, it was 4% of the import. And in 2016-17, it came down to 1.3%. धीरे धीरे imports उसका reduce होते जा रहा है. Then the fourth thing what we import is iron and steel. Earlier we were importing iron and steel in India, we were importing. But now Government of India, in coordination with many private sector, जैसे we have Tata Steel, we have government का खुद का company है called as SAIL, Steel Authority of India Limited. Then we have JSW, Jindal Steelwork, and many more. NMDC, National Mineral Development Corporation, etc., etc. ये ऐसे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में खुद डेवलप हो गए हैं. And we have also started mining up iron ore. And as a result, the imports of iron and steel in India over the period has declined. Earlier, it was roughly around 4.9%. Now it is 2.1%. Yogita, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? योगिता, read what we are discussing. हे योगिता को कोई चाय पिलाओ रे उसके घर पे जाके, उसको नींद आ रही है. इधर हम डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्ट का और वो उधर क्वेश्चन मुझको पूछ रहे हैं. What about spices? We are not importer of spices. We are exporter. जाग रहे हो योगिता? Go and wash your face with cold water.